Hello, good evening, everyone. Good evening. Shall I start today's session? Good evening, one and all. Yes. Okay. So today we are going to start the geography session. Okay. Yes. These physical features we have done kya? Plateau part. Hello, can you hear me? No, ma'am. Plateaus we have not done. Okay, plateau's not done. I think this Luni and all we have done na. Barkhans, है ना? Yes, ma'am. Okay. So this also we have done. Konkan, that Yes, Kannada ma'am. plain. Okay. Uh, so this drainage also we have done, right? Different kind of then here that the drainage system, Himalayan and peninsular. This also we have done. The different type of drainage pattern. Okay, sorry, different type of drainage pattern that also we have done. Then after that, Himalayan rivers and the peninsular river that also we have done.
Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yeah. Okay. Uh, Near Devprayag. Okay. Manga is here. Sorry. Yes. Hello. Narmada Basin also we have done. Tapi also done. Right? Godavari Basin, then Tapi, Mahanadi. Krishna Basin we have done. Yes, miss. Okay. I think you all are in sleeping mood. The last few questions. Okay. Manga is here. Yes, miss. Okay, ma'am. Okay. So lagoons we have already done. Where the most of the lagoons can be found? In which state it is? Kerala. 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 Yes, yes, correct. Okay, so Kerala. the role of rivers in the economy. Okay, before that, I'll ask you a few questions. Okay, ma'am. Okay, how many years did the British rule India? 200 years. 2 centuries. 1.5 century, 150 वर्ष. 100 years. 150 Pardon, years. please. 200 years. Sure, 200 or 100 or 150? 150. 150. Yes, 150 is the correct answer. Okay, Yeah. then next question. I think most of the students, they don't know about it. Just mute yourself. Who is singing song? Everyone just mute yourself. I don't want any disturbance from your side. In November 1943, Japan conquered Dash Island and handed them over to Azad Hind government. Andaman and Nicobar. Yes, ma'am. very good. Andaman and Nicobar. Very good. Can you tell me this Azad Hind Fauj? Okay. So this Fauj Yes, ma'am. has Subhash Chandra Bose. okay, he's a founder. Okay. Ma'am created was Subhash Chandra Bose. Huh. Huh? This force is created by Subhash Chandra Founder. Okay. Subhash Chandra Bose was the founder of this Azad Hind Fauj. Who is Mangya? Just mute yourself. Okay. Now, who was the president of Indian National Congress session of 1905? Ma'am, Ma'am, Dadabhai Nauroji. No. was it Nehru? No. Gopal Krishna Gokhale. Okay. Yes. You know that when the Maharashtra state actually this did come into existence. Ma'am, 1960. May 1960. Okay, 1st May 1960. And 19, you know about it, the 1960. same, okay, on the same date and same year that Gujarat also separated from Maharashtra, right? Ma'am, was it Goa or Gujarat? No, Gujarat. Okay, ma'am. Ma'am, Gujarat Okay. was already a state, na? No, no, no. On the same date that Gujarat also separated. Okay. Okay, ma'am. Actually, here that the government has taken decision to split these two states. Okay. Actually, here I think you might have heard about it or not. I don't know. But here actually what happened?
more than 100 people were killed in that. Okay, and that is why the government has taken the decision to just separate these two states. Okay. Okay, ma'am. Then the next question. I am is one guy. Next question is, who was the first Indian female doctor? Anandibai Joshi. Anandi Gopal. Anandibai Joshi, ma'am. Died by Anandibai cancer. Gopal Joshi. Joshi. Yes, she died by cancer. Okay, correct. And the last, in which state is Kakori railway station situated? Ma'am, can you repeat? In which state is Kakori railway station situated? Factory. Eh? Kakori railway station. In which state? I think it's UP. It's in UP. Okay. Actually, here I think you know about it that Bhagat Singh, है ना? He did the bomb blast. Yes, ma'am. Yes, Yes, Ah, ma'am. Yes, ma'am. okay. He wants to just kill that one person, or he just wants to give that, as we can say, the intimation to the British government. What he actually wants to do. He Ma'am, wanted to give he intimation to the British government. Mungai is here. What was the reason behind it? Only one student, please just unmute yourself and just give the answer. Don't give answer in chorus. Ma'am, he wanted the Britishers to hear their voice. Yes, Yug. Okay. Ma'am, can you repeat the question? Same time, someone is unmuting. Okay. Now here, see, rivers have been the fundamental importance throughout the human history. Actually, here I think you know about it that when the civilization was hello. When the civilization was there, that time mainly the people are settled down, okay, or the settled near to the river bank area. So first, I think you might have heard about that Indus civilization. Yes, are you getting me? Yes, ma'am. Yes, it Yes, was the ma'am. oldest civilization, as I would say, right? Asia. Yes. Okay. Now here, see, actually the importance of river, yes, in different ways that we are using for irrigation, okay. Then here inland navigation, actually here this mainly it works in particular season or in the monsoon season, okay. Mainly that inland navigation, it doesn't work like, okay, as a as we can say the external, it just working. Then hydropower generation, yes, it's really important as we are building the dams, okay, and as we are just setting down that the what I said, the turbine, okay, yes, and here how it rotate and how it rotate, and likewise the, as we can say, the electricity can be generated. So we and Generated. our, yes, we and our dependence on water. Actually, we are using that water in different purposes like domestic, like municipal, agriculture, then industrial, okay. So here in different way we are using it. Due to all this, river are being drained out, polluted by the heavy load of untreated sewage and industrial influence. Actually here, as I already told you, the nature is giving, yes, giving us in very, as we can say, the pure form, but we people are just making it pollute. Yes. Now see this effect. Yes. Quality of water Yes, as well as self-cleansing capacity. Okay, just as we can say, because of that only, yes, own borewell as they're digging out. Okay, yes. So everywhere, as we can see, the many of the people, they have their own, as we can say, they have their own what? Borewells. Okay. So here, as we can say, really it becomes very much problematic. Yes. And here, as day by day, the water level, groundwater level is going to be
decrease. And as we know that, okay, as how to just do that rainwater harvesting and all, as we are doing this to increase the water level, okay, in the ground. Yes. Now here see actually concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plan. Actually here the why government has started this. Actually because of this many of the rivers, see many of the people when they are visiting to the Ganga river and all, okay, actually these people are the putting ashes in the water, then the people are they are just taking bath, okay, even they are washing their clothes. So because of all these things, okay, the river water is getting, yes, as we can say, polluted. So government has taken that initiative. Yes. So here the National River Conservation. Okay. So here to conserve the water, Mangya, just mute yourself, otherwise I'll remove you. Ishwari. Okay. So here like this, as we are just using these steps to just conserve and preserve the water. And here that the water purification. Okay. We are doing like this. We are just using such kind of steps. Now here we'll come to the next point. I explain you in very short manner what is climate and what is weather. Which factors are affecting on the climate and which factors, okay, actually same factors are there which are affecting on this weather and on this climate. Okay, so here we are going to discuss about this. First of all, we will discuss about weather. Weather means what? Actually here I told you that day to day or to our changing condition. Yes, of the atmosphere, it is called as weather. Okay, weather as we can say it's a short time, okay, short period situation or the condition of atmosphere. When we are talking about the climate, so it's a sum total of weather, or we can say it's a regular or the constant pattern of weather which is observed by more than 30 or 35 years. So it is called as climate. Yes, for example, Rajasthan climatic condition is very hot and dry. When we are talking about the coastal region, okay, so it's very much as we can say humid type of climatic condition. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now here see actually their elements are same, means here the same factor can be affecting on as well as the weather or on the climate. So same factors are there. So first of all, actually this is the temperature, then atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. What is this? Precipitation means what? Rainfall. Ma'am, to conserve rainwater. All happens during December. Hey, who is saying that to conserve the water means precipitation? Ma'am, rainfall. It's rainfall, like as we can say the water cycle. Okay, so like this, as we can say, on the basis of generalized monthly atmospheric condition, this year is divided into seasons such as winter और रेनी समर और रेनी सीजन. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया में रेनी सीजन तो एक्चुअली जो है ड्यू टू द विंड डायरेक्शन. आर यू गेटिंग मी? सो ड्यू टू द विंड डायरेक्शन ओनली वी आर रिसीविंग द रेनफॉल. Yes, and I told you in our country India we are receiving two type of rainfall. Yes, can you tell me which are they? Monsoon and Retreating monsoon and ongoing, what we call it, ongoing monsoon. Southwest Okay. monsoon. Okay, see, actually here the actual monsoon, it is also called as advanced monsoon, and the another one is that is called as just now you said southwest. So it's also called as retreating monsoon. So in this, okay, in a year twice. Sorry, in a year twice we are getting this rainfall. Okay, now here we will discuss about this. Yes, okay, very short. We will do the revision. Here that monsoon type of climatic. As in our country India, we are receiving the monsoon season twice in a year. That is why it is called as, and it's considered that the monsoon type of climate. Then monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. As seen,
Just now I said, okay. Actually, this term also we have cleared that seashore and the land shore, okay. Offshore and onshore. Are you getting me? Sea breeze and land breeze. Yes? Yes, students? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Huh. So, okay. So that is why this means as we are receiving twice that monsoon in a year, that is why it's called as monsoon type of climate. So found in South and Southern East Asia. So despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic condition. If we are talking about that rainfall, so rainfall is, as we can say, is a varied from one place to another place. Okay, it's not equally distributed. When we are talking about the temperature, so temperature also we can say it's vary from place to place. Somewhere the temperature is very much hot and somewhere the temperature is very low, or as we can say very cool. When we are talking about rainfall, so somewhere that places they are getting that heavy rainfall, and in few places, okay, they are receiving very scanty rainfall. Okay, so like this, as we can see, the variations are there in the both ways. Now here see, actually summers in Kashmir, as you can see here, and summers in Rajasthan. Okay, but Rajasthan is, as we can see, it gets very scanty rainfall, means very low rainfall. And here, as we have already discussed, so actually here this place is located on a height. Yes, I actually hear that when they're talking about Kashmir. So altitude is affecting on the climatic condition of Kashmir. That is why the Kashmir climatic condition is very, as we can say, yes, how it is, it's very cold. When we are talking about Ladakh, आपको पता है लद्दाख में भी बहुत कम से कम मात्रा में बारिश होती है. Actually here, as we are talking about मैम Ladakh, राजस्थान से so भी कम ना. हाँ, राजस्थान से भी कम. Actually here that actually Ladakh is located in not high altitude. That is why its climatic condition is very much cold. Are you getting me? Yes, ma'am. Yeah. Okay. You know that when we are talking about its pores and pores, what does it mean? Can you If please I'm repeat your question? if I'm saying okay that it's a continuously pouring and pouring, what it is called? Ma'am, I Continuous didn't rain. get your question. Hi, yes, someone Parth. Yes. Who has unmuted? Boy, chalo bolo jaldi se. Ma'am, I think my continuous rainfall. yes, actually here Tanvi, listen carefully. Just now I asked what is pouring and pouring. So here who has given the answer? Who has given? Today I'm not able to see who has unmuted. Parth, you were there? Or Aryan? Who gave the answer? Ma'am, I gave. Okay, so when it continuously that raining, okay, then and then as we can use this, okay, it's continuously pouring and pouring outside. Then we understood. Yes, ma'am. Okay, so here see there are variation in the form of and type of precipitation. Okay, so here actually diversity. Yes, the coastal and the interior parts. Yes, some variations are there. Now come on, tell me which type of climatic condition is there in near the coastal area and how it affecting. Humid. It's equable climate or maritime climate. Humid. You said who Hot said and humid, humid? ma'am. Ma'am, Who me. said humid? Me. Please, Parth, na? No, Manoj. Anuj. Okay. Yes, Anuj, very good. Okay. Actually, here that humid type of climate. Now, exactly what does it mean? Humid means what? Amount of water molecules present in air. Yes. Moisture in air. Moisture in air also we can use. Yes. When the water vapor presence in the air or in the atmosphere, it's called as humid type of climatic condition. Correct. Now, there is decrease in rainfall generally from east to west in northern plain. Okay. So here, now how it is affecting? See how the latitudes are affecting on this climatic condition. Yes, but see student, if they are just same latitude zone or same latitude में अगर particular countries आते हैं, so they are experiencing same type of climatic condition. Are you getting me? Yes, ma'am. हाँ.
पर्टिकुलर अगर But लैटिट्यूड how, में, ma'am? हाँ see Because I'll our explain. Earth is tilted, na? हाँ, yes, it is tilted. But see, in particular latitude, that see, now you can see here the globe. Can you see Yes. this? Huh. See, so these regions, suppose for example, these regions are here, okay, lying between this particular latitude. Yes. So here this region, the complete region can have as the same type of climatic condition. Yes, Earth is tilted at 23.5 okay. The areas which are come under the frozen, okay, जब मैं आपको example बोलती हूँ frigid zone का, okay, so you will understand this better, okay. See, जब देखो for example अगर frigid zone में ये particular area आता है, तो यहाँ पे पोलार में देखो आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ओके, सो यहाँ पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा, कैसा होगा क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड फ्रिजिड होगा। जोन में, हाँ, Cold. तो वो कोल्ड, अभी ये देखो यहाँ पर जो है ये सेम इट कम्स इन फ्रिजिड जोन, सेम टाइम दिस रीजन आल्सो विल कम इन द फ्रिजिड जोन, ओके, आर यू गेटिंग मी। अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगी सपोज दैट vegetation, okay, so in particular region they are having that same type of vegetation, okay, suppose for example those countries are lying under this equatorial region, are you getting me, जो भी countries जो है equatorial region के अंडर आते हैं, so here as we are getting that कि these regions are, as we can say, which type of climatic condition they have, it's a hot and wet, do you agree with me, hello, Yes. huh. So those countries are lying between the equatorial region. So they have a same type of climatic condition. And which type of climatic condition they have? It's hot and wet. Okay. As why it is so? Actually, here that equatorial region, as everyone knows, it just, as we can say, it's very much closer to the sun. Okay. And the directly rain, as we can say, the sun rays, okay, it just directly falls on the equator. So because of this, as we can say, this region are getting that very hot temperature, high temperature, okay. So as the water bodies which are lying, okay, in this particular area, so it just continuously getting evaporated, okay, that is why, as we can say, this region are getting that heavy rainfall. Do you agree with me? Yes. Yes. Yes, ma'am. हाँ, okay, चलो. Now you understood? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay, chalo. We'll discuss about this. Okay, see. Now here the climate controls latitude. Due to the, as we can say, curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. See, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो ये region जो है ज्यादा से ज्यादा sunlight hit करेगा. Okay, आपने solar ये जो है अभी सोलर स्टाइज वगैरह जो है, ओके, समर सोलर स्टाइज, then winter solar skies, okay. So here that particular thing, when you just understood this figure, then you just come to know how it is actually affecting on it. See, sun rays are, as we can say, spread, or we can say it's very much slant over here, okay, in the northern pole, and here that southern pole, okay. So here sun rays, as we can say, the spread over a wide area. And when we are talking about the equatorial region, so sun's rays spread over a narrow area. Okay, as you can see the here actually the slanting rain, okay, slanting rays as these regions are getting near to the polar region. Yes. See. Okay. Now how it is affecting that altitude, as just now I shown you about latitude, how the latitude affecting on the climate or on the weather. Then when we are talking about this, so it's a altitude. As the altitude is the distance measurement in vertical or up direction. So those area or the region, it's near to this water bodies. Okay. So here their climatic condition or their temperature, as we can say, it's very differ. The places which are located on a height, or we can say it very much, as we can say, on altitude. Yes. So these region also, as we can say, the air temperature, yes, as we can say, really varied from this area. Do you agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Normal lapse rate. Yes. So here altitude is a distance measurement in vertical
or a direction. The climate conditions at higher altitude varies from that lower altitude. Okay, so how it is affecting, just now I said to you. Now we'll go to the next, that is the climate control. How the pressure and wind system is just affecting. Okay, so climate controls that pressure and wind system. How? So pressure and wind system depends upon the latitude and altitude of place. I think you have heard about that low pressure and high pressure area. Yes, Okay, ma'am. abhi, Mainly हाँ, Yes, in ma'am. coastal Wind regions. gets attracted towards low pressure areas. Mainly in coastal yes. regions. Sorry, pardon, please. Mainly in coastal regions. Yes, very good. Yes, Anuj, correct. Okay, so here low and high. So like this, as we can say, so it is affecting on this climatic condition and it controls the climatic condition. Now pressure and wind, it just influences on the temperature and the rainfall pattern. Okay, see, this we have already done. Am I right? Yes, ma'am. Sea breeze. Okay, sea breeze and here land breeze. Okay, you can see sea breeze, it just blow during the day and land breeze blow just during the Night time. night. Okay, now when we are, suppose for example, when we are taking the example of Rajasthan, actually here during the day that the Rajasthan climatic condition is or the temperature is very much hot and at night it just very much cold. Actually here there is a reason behind it, that as we can say loose sand. Okay, it just observe the temperature very fast and it loses the temperature very fast. That is why the during the day the temperature, as we can say, it's very much high and very much hot. And when we are talking about at night, so as it reduces the heat, okay, as we can say, it becomes cool down. That is why the Rajasthan, as we can say, night temperature is very much cold. Yes, are you getting? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. And when we are talking about the water body and the area or the state which are located to the near to the coastal area, actually water, it just takes too much time to be hot. Okay. And the water it takes too much time to be cold. Okay. Yes. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. Okay. Now see here, who is Vedant Sonone? Okay, chalo. Now here see we will discuss about relief, how the relief can affecting on it. So relief to plays a major role in determining the climate of place. Physical features control the climate of an area. How the physical features? Tanvi Yes, ma'am. or Parth, any one of you, please just Ma'am, raise I'm your hand. I'll Tanvi. make you. I'll just make you host, Tanvi or Parth, Aryan, any one of you. I'll make you host. Okay, I'll make you the host, and please allow me to just do this sharing. Okay, just a minute. Allow me to do the sharing. Ma'am, I have a doubt. Hi, yes. Who is this? Ma'am, if a You. if a Okay. mount, ma'am, if a mountain is at the equator, then will it be cold or hot only? Sorry, it will be cold. Okay, ma'am. Huh. Tanvi, please just allow me to just do the sharing. That PPT I'll share then. Ma'am, I have allowed. Okay, just allow me to share the PPT, then I'll clear you down. Ma'am, I have allowed you. Okay, just a minute.
Okay. You understood? Just your doubt is clear? Yes, ma'am. The mountain, okay, the climatic condition of where we are going on mountain. So वहाँ पे climatic condition कैसा हो जाता है? Cold हो जाता है. आपको पता है, देखो, actually when we are talking about the highest mountain peak, so it's a Mount Everest, okay? Yes, बहुत सारे जो है, तन्वी immediately जिससे आवाज आ रहे हैं ना उनको म्यूट कर दो प्लीज. तन्वी, हाँ मैम, किया म्यूट. हाँ, okay. Or when anyone, okay, is singing song in between, just remove him. Immediately just remove him, okay? मैम वो कॉन्स्टेंटली माइक ऑन कर रहा है, बार बार उसे म्यूट करिए, Mangya. बार बार ऑन हाँ करिए. हाँ, Mangya. And don't allow him to enter in the class then. Okay, chalo. So here that actually, what I was asking, many of the mount, okay, the mount climber, as we have already learned about it. Yes, yaad hai aapko. But here that I have a doubt that why the people cannot climb on that, means just as we can say the Kailash mountain. You know why is it so? Ma'am, because of less air, oxygen, less oxygen. Yes. Also, Deep ma'am, slope. Less atmospheric pressure on heights. Okay, the oxygen, yes, atmospheric, yes, it's correct. And oxygen level also, as we can say, just going to be and decreased. ma'am, in our body, keratin rises. Yes. And Ma'am, actually, steep you know slope. that Kailash mountain, it's as we can say it's not hardened. Okay. It's as we can say it's very much soft. As we people cannot just climb on it. Sorry, the mountaineer cannot be just climb on it. Are you getting me? Yes, ma'am. Teacher, ma'am, I have heard that when people climb there, their life increases, like their And that aging takes heartbeat place, also, yes, going to be increased. increases. Okay. Hairs and nails also increase. Yes, correct. Okay, now here we'll discuss about that, southern America. Okay, in the, as we can say, western side, which mountain ranges is located here? In America, ma'am. Huh? Western Ghats. How? In southern America? How Western Ghat? Ma'am, Rockies. Ma'am, Andes. No, you just tell me. You are giving Ma'am, option to me. Rockies. Rocky, Andes. Ma'am, east or west? East, you know? It's west. West. Andes. पक्का? पक्का. ओके, चलो. मैंने एक मूवी देखा था, उसमें जो है उनका प्लेन क्रैश हो जाता है एंड देयर लाइफ बिकम वेरी मच, एज वी कैन से, डिफिकल्ट. Yes, actually these people are not getting the food. I think you might have heard about it. वहां पे भी जो है बहुत सारा मतलब लोगों को ऐसे बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होता है. एंड हियर that many as mysterious things can be found, okay, in that Ma'am, particular place. only 16-year-old girl survived. वो वाली क्या? हाँ. I know. Amazon जंगल में लैंड किया था. Yes, वहाँ पे. Yes. actually their plane was crashed. Okay, chalo. Now, when we are talking about this climate, so here the climate controlled by the relief also. Now, how relief? Actually, relief means what? Relief plays that two important role to determining the climate of place. Actually, here relief like physical features controls the climate of an area. When we are talking about the people who are living in plain area, their climatic condition different. The people, as we can say here, okay, in the mountain area, so their climatic condition, as we can say, very different. Yes, so here that the relief, the different kind of features, as okay, as we can say like this. High mountain act barrier for cold or hot winds. Then here windward side cause precipitation, and here leeward side of mountains remain the relatively dry. Actually, sometime what happens, sometime, see, for example, Himalayan mountain, it just act as a barrier
it just restrain the winds, okay, which are passing, yes, through from India. It just restrain, and this wind actually here, how that as we can say retreating monsoon, that retreating rainfall can be occur. Actually here Himalayan mountain ranges act as a barrier when this wind just passes through from that sea and the ocean water bodies, तो वो उससे टकराकर वापस आ जाती है, ओके और इसी तरीके से हमें जो है रिट्रीटिंग मानसून हमें मिलता है. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like this is the best example of this Himalayan, okay, mountain range, and it act as a barrier, and it just restrain the wind to pass, okay, beyond that. Okay, chalo. Now here see the factors affecting India's climatic latitude. Latitude, altitude, pressure, and winds. Actually, here, when we are talking about our country, India, so these three major, as we can say, major factors are affecting on this climatic condition. Now, pressure and surface wind, upper air western cyclonic disturbances, and tropical cyclones. I think you might have heard about this equatorial region, tropical zone, subtropical zone. Yes? Okay. Yes, So here ma'am. in that region, actually, whatever and whichever the kind of climatic condition they are receiving, so likewise they are recognized. Okay. India's climate depend on its latitudinal extent. So Tropic of Cancer, it divide the country into almost two halves. Yes, part lying south of the tropic. So वो नीचे का जो part है, suppose Tropic of Cancer, it passes through from our country India, and when we are talking about the southern part, okay, of India, yes, as below the Tropic of Cancer, so these type of, as we can say, this region, it received that tropical type of climatic condition. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो ये जो region है, ये tropical type of climatic condition experience करता है. When we are talking about the part lying south of the Tropic of Cancer, okay, so here actually here that same it is na, as a part lying south, okay, above part, and here that below part, okay, so here this is the subtropical climatic condition. Actually here that equator, okay, I think, listen carefully, so here equator, okay, so the region which are, as we can say, near to the equatorial region, so that climatic condition also affect on that particular area. Okay, ऐसे equatorial region जैसे हम बोलते हैं ये बहुत कैसा है, hot है. Okay, so here that also we people are just, as we are getting the heat, okay, and we are receiving the maximum heat, yes, when in the southern part of India. Yes, only the which latitude passes through from India, that is Tropic of Cancer. Are you getting me? Yes, ma'am. So factor affecting India's climate, that is altitude. We know how altitude controls the climate of an area. So here Himalayas in north, which have average height about 6,000 meter. Okay, means average height it is given. Actual height is, come on, you know that. See, it just extend from 6,000 meter. 8848. More than the Okay, so here prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. Okay, as we can say, really it's very, as we are very lucky, as here just we are, as we can say, bounded by the Himalayan mountain ranges. Because of these mountains, the subcontinent experiences comparatively milder, okay, milder winter compared to the Central Asia. In this way, altitude of Himalaya affects the climate of India. Just now I explained you how it is affecting. Actually, Himalaya act as a barrier and it just restrain the wind, okay, and the wind direction. And as the wind just, as we can see, the bank to the Himalayan mountain, suddenly it just reverses back, okay. So because of this only, as this is the one reason, okay, as we are getting the retreating monsoon. Understood? Yes, ma'am. Yes. Now here see, India's climate and associated weather condition in India are governed by following atmospheric condition. So here just now we have already discussed this pressure and surface, then upper air condition, western cyclonic disturbance, and the tropical cyclones. Now here, India lies in the region of
northeasterly winds. How? They blow south, get deflected. The right due to the Coriolis force. Now what it is? Yes, you know why exactly this Coriolis force can be experienced? Actually, Ma'am, here this is revolution of related to Earth. the okay, this is all because of the, as we can say, revolution. Yes, actually here Earth has a two movement, that rotation and revolution. Okay, so here actually because of this, and it just move on towards the equatorial low pressure area, it carries the very little moisture. According to this, India should be an arid land and low rainfall should be there. Okay, why is it so? Now we'll discuss what exactly it means. See, it is a force responsible for deflection of winds towards the right in the northern hemisphere. See, we assume that this is the equator. When we are talking this equator, it divides the earth into two parts. This portion is called as northern hemisphere and this is called as southern hemisphere. Okay, so here actually the rotation and revolution. Actually, rotation means what? When the earth moves around on its own axis, it is called as rotation. And when the earth moves around the sun, it's called as revolution. So here see, Coriolis force. So it is a force responsible for deflection of winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere due to the difference in the linear velocity of the earth rotation and its atmosphere. That is why, see here, as see how it is just experiments. For example, mulberry, okay, यहाँ पे mulberry का एक picture दिया है. So like this, okay, that likewise, okay, the movement, as we can say, it just occurs and it just affecting on this Coriolis force. Because of this, the Coriolis force can be occur on the earth. Yes, so this is also Excuse me, affecting on the ma'am. climatic condition. Yes. Ma'am, here Amar Pawar is requesting to record this session. So should I approve? It's already recorded, na? He is requesting to record this session to his computer. Okay, start recording it. Okay. The climatic conditions over India is unique. Actually, here when we are talking about the diversity of the people, yes, and as well as the physical feature, okay, here also we can see the diversity and even the climatic condition. Here also we can see the diverse type of climatic condition. Now here difference during the winters and summer. Actually, here this is the difference actually because of the pressure, low pressure area over the interior of Asia and high pressure on southern Indian Ocean. Actually here because of this high pressure and low pressure, yes, it's just affecting on this winter and summer season. So southwest wind start moving towards the Indian mainland. Moving over the ocean, these winds carry the, as we can say, carry the cause rainfall. Because of this only, yes, we are receiving the rainfall. Okay, because of that low pressure area. Low pressure area, it just receives the rainfall. Now, I think you might have heard about this jet stream. Yes? Yes, ma'am. Okay. So आप मुझे बोलो जेट स्ट्रीम जो है किस सिचुएशन में ये होता होगा? अपर एयर सर्कुलेशन तो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन कैसे होगा? It's a hot wind, as we can say, or it's very much cold wind. What does it mean, the jet stream? Hot winds. Hot winds, yes, correct. When and how it passes? In higher altitudes. Ma'am, in troposphere. Okay. Yes? In higher altitudes only, no? हाँ. चलो देखिए अभी. See, there are narrow belt of high altitude above 12,000 meter. How much? That 12,000 meter. Westerly winds in troposphere. Okay. Their speed varies from about 110 kilometer in per hour in summer, about 184 kilometer per hour.
in winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant area and the mid latitude and the subtropical jet stream. तो इसकी वजह से हमारे इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेनफॉल, ओके, सो यहाँ पर इफेक्ट होता है या नहीं, बोलो. Yes, ma'am. See here you can see how the jet stream passes, okay. Yes, बहुत ही स्पीड में रहते हैं जेट स्ट्रीम, ओके. जस्ट कैरी दैट. कौन गुनगुन कर रहा है? Okay, so likewise this is affecting on the India subtropical climate. Okay, बोलो अभी मुझे subtropical region कौन सा आएगा? Above the above the northern tropic of India. Cancer or southern? Yes. Okay, northern part of India, it just as we can say it receive or it experience that subtropical climated type of condition. Why subtropical jet stream? Located approximately over 27 degree to 30 degree. Okay. And the position of jet stream in summer and winter, north to the Himalaya and south to the Himalaya. So because of this, in summer, actually in summer, it just direction north to Himalayas and in winter, south to the Himalaya. Okay, so winter, south में जो है जब winter रहता है, तो इस तरीके का जो है, जो हम बोलते हैं कि jet stream direction होता है. And here, okay, how it affecting on the North Himalaya? So during this summer, okay. So like this is the, as we can say, influence on the climatic condition of India. So western cyclonic disturbance also can be experienced because of the jet stream. Now, what is western cyclonic disturbances? The weather phenomena of winter month occur due to wind. Okay, winds that because of the jet stream. Okay, बहुत ही speed में वो travel करते हैं. Then when we are talking about this, how it is affecting on India's climate? So first of all, actually due to western cyclonic disturbance. The weather of north and northwestern part of the country is influenced. So northern part means here that above the as we can say the tropical Cancer, sorry, above the Tropic of Cancer, that region can be experienced and influenced because of this jet stream. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, you can see here. Okay. Now, tropical cyclone. How the tropical cyclone is affecting on the type of that the climatic condition of India. Yes. So here actually in which situation it occurs? So occur during the monsoon as well as in October November. October November पता है आपको, यहाँ पर जो है हमें जो retreating monsoon receive होता है. Okay, during this month. Yes, जब हमारी यहाँ पे जो है winter season चालू होता है. Okay, so here actually because of this actually ये क्या होते हैं? So यहाँ से जो है wind pressure ये pass होता है. Okay, यहाँ पे Himalayan mountain range. Okay, it's act as a barrier. And then okay ये जो है ये उसको हम बोलेंगे वहां से जो है मतलब यहाँ से जैसे हिमालय माउंटेन जो है एक्ट एज अ बैरियर एंड देन ओके इट जस्ट रिवर्स बैक. ये जो विंड्स है विंड प्रेशर ये रिवर्स होते हैं पीछे और फिर यहाँ का जो ओडिशा ओके देन हियर दैट आंध्र प्रदेश ओके तमिलनाडु और इसकी वजह से यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है. आर यू गेटिंग? ओके, जैसे ही भारी मात्रा में बारिश होती है सो इट ऑल्सो कॉजेज दैट destruction and the floods. Are you getting? Yes. Huh. Okay, so likewise this is affecting on this India's climatic condition. Now here the Indian monsoon. Seasonal reversal. Reversal क्यों है seasonal? Seasonal means in particular season only we are getting that rainfall and reversal. Okay, because of this reverse. Okay, as we are because of the reverse of wind direction. We are getting that rainfall. Okay, so twice we are getting this rainfall. Now sailors first notice this phenomena and were benefited from it. How? आपको पता है कौन से सेलर तब जो है जब हमारे यहाँ पे जो साउथ मानसून ओके साउथ मानसून जो है वहां पे जो है मतलब ये कंडीशन क्रिएट था. सो वहां से कुछ सेलर्स जो है वो हमारे इंडिया से मतलब इंडिया से होकर जा रहे थे सी अरब सेलर्स. यस अरब सेलर्स थे, उन्होंने मानसून नाम दिया था उनके. हाँ
ओके, सो ये जो अरब सेलर थे, ओके, उनको ये हम ऐसे बोलेंगे उनको हेल्प किया था। ओके, कौन था ये? यस, मैम वो मंग्या कोई तो था, वो था। कौन? मंग्या बोल के कोई वो तो है ना मैम, वो था। निकालो उनको, कौन है वो? यस मैम। हाँ, रिमूव हिम। ओके, सो यहाँ पर जो है इस तरीके से रिवर्स जो है मानसून विंड डायरेक्शन में हमें ड्यूरिंग ए ट्वाइस वी आर रिसीविंग द रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस विंड डायरेक्शन। अभी कैसे, लिसन, द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। सो मैकेनिज्म ऑफ the first, that is differential heating and cooling of land and water. Second one, the shift of position of intertropical convergence zone. Okay, suppose for example, what is this ITCZ? Okay, this full form is intertropical convergence zones. The area which comes under this tropical zone, they are called as intertropical convergence zones. The the presence of high pressure area is Madagascar. Okay, so here Tibetan plateau gets intensely heated. Okay, so वहां पे Tibetan plateau जो है it get intensely heated. Okay, as here that the movement of westerly jet stream to the north of the Himalaya and presence of the tropical easterly streams over the Indian peninsula during the summer. Actually here as the summer get end, okay, आपको पता है 1 जून से हमारे इंडिया में जो है मतलब वो मानसून मानसून जो है इट जस्ट एंटरिंग इन आवर कंट्री इंडिया। अभी कभी जो है कभी अभी ऐसे हो रहा है कि एक्चुअली ओके पहले तो ऐसे होता था कि 1 जून को ही जो मानसून है हमारे इंडिया में दस्तक देता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है जो वेरिएशन जून 15 भी आता है, कभी जून का 30 भी आता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस एज वी आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस द क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो कैन बी as we can say that as it affecting on that particular area. Okay, now here see the differential heating and cooling of land and water. So सब तरफ जो है वो यहाँ पे सेम टाइम पे हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसीजर नहीं होता है, जैसे कि लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि राजस्थान में क्या होता है, वो जो सैंड है लूज सैंड, ओके, तो वो जल्दी हीट होता है और जल्दी कूल भी होता है, इट जस्ट रिड्यूसेस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर क्वालिटी तो वो तपने में ज्यादा वक्त लगाता है और हीट रिड्यूस करने में भी ज्यादा वक्त लगाता है। ओके, now what is this interconvergence zones? So intertropical convergence zones is brought through the low pressure. Okay, so actually here why it is called as low pressure, because of this we are receiving heavy rainfall. This through belt is formed due to convergence of northeast and southeast trade winds. जो ये trade winds है, okay, जो because of this trade winds as we are getting the rainfall. Now this ITCZ belt is normal position is equatorial latitude, but it moves north or south with apparent movement of the sun. Actually everywhere we cannot say that particular area it just received the same type of temperature. Okay, it is, as we can say, it's varied from place to place. Now here when we are talking about this, the presence of high pressure area east of Madagascar, then the Tibetan. Okay, so here it is that Tibetan plateau get intensely heated. The movement of westerly jet stream to the north of the Himalayan and the presence of tropical. Actually, it's very much complicated when we are talking about jet stream. Okay, so you just remember that. Okay, only इतना ही याद रखो कि आपको jet stream जो है मतलब how it entered in our country India and how it is affecting. अभी हमने तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया था एल नीनो, और मैंने और एक बोला था आपको, बोलो। ला नीनो। yes, El Nino and La Nino. Okay, see ये जो है ये नॉर्मल ईयर है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो है डायरेक्शन होता है, कोल्ड वाटर along South American coast, how it just reverse. And when we are talking about El Nino year, so it just easterly winds, okay, weaken warm water to move eastward. ओके, आपको और एक इंफॉर्मेशन है, जब देखो इंडिया में क्रिसमस जो है वो दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है इन विंटर सीजन। ओके, तो कहाँ पर समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है?
Australia in southern part. Mexico. Why it is so? मीन्स हमारे वर्ल्ड में तो बहुत सारे जो भी पार्ट है, ओके, सारे मैक्सिमम कंट्रीज में, ओके, ये विंटर सीजन में एक्सपीरियंस किया जाता है. एम आई राइट? Ma'am, due to latitude. Ma'am, because of the tilted axis of Earth, sunlight मतलब different जगह पर different टाइप पे sunlight गिरती है, इसीलिए वहाँ पे मतलब टाइम बोलो. तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे थोड़ा देर से हो रहा होगा बात क्रिसमस. चलो, write it down this today's question and I just want proper answer of this. Ma'am, Okay. can you please repeat your question? My question is, in our country, India, and most of the part of the world, in many countries, we are celebrating Christmas in winter season in the month of December. Okay, which country celebrated the Christmas during the summer season? Okay, when we are experiencing summer season. Okay. Yes, ma'am. चलो, कौन सा ऐसा रीजन है वो कि वो अलग इसमें सेलिब्रेट करता है क्रिसमस? ओके. यस मैम. ओके, मैम चलो. आंसर तो दे दिया ना. किसने? मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला ना. मुझे कंट्री का नाम भी चाहिए, क्यों एक्सपीरियंस होता है वो भी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. ऑस्ट्रेलिया करेक्ट है. मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे. मैम वही ना कि वो टिल्टेड है, तो जो विंटर्स है वो सदर्न पार्ट में अलग वक्त के होते हैं और नॉर्दर्न पार्ट में अलग होते हैं. पक्का आप क्रॉस चेक करके मुझे बताना है, ठीक है? ओके. व्हाट इज द बर्स्ट ऑफ मानसून? आपको पता है क्लाउड बस्टिंग? सुना है आपने? मुझे लगता है मैंने आपको पहले पूछा था. क्लाउड Yes, बस्टिंग, ma'am. हाँ, कहाँ पर होता है क्लाउड बस्टिंग? मेघालय में. कैसे होता है? मतलब ऐसे क्लाउड्स आते हैं और ऐसे बस्ट हो जाते हैं क्या? क्या होता है एक्चुअली? क्या प्रोसीजर होता केदारनाथ है में क्लाउड फिर बस्टिंग में? सॉरी. केदारनाथ. हाँ, तो कैसे होता है? मतलब ऐसे होता है क्या कि क्लाउड आ गए और बस्ट हो गए? ऐसे प्रोसीजर कैसे होता है वो? मैम जब किसी क्लाउड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तब. ओके, वेलोसिटी, हाँ, चलो. फिर कैसे होता है वो? बोलो. तो वो ऐसे फिर होता है एक कि, साथ बहुत सारा पानी आ जाता है. अच्छा, उसे एक साथ बहुत सारा, मतलब मैंने जैसे बोला कि इट कैरीज वाटर, ओके, और क्लाउड्स बहुत भरे हुए हैं, काले बादल छाए हुए, और इट जस्ट, एज वी कैन से, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इमीडिएटली जस्ट बस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस. इसे ऐसे होता है क्या? When it just continuously raining and raining, okay, so like मतलब continuously बारिश जो है वो होती रहती है, okay, और जो बारिश है बीच, it just don't stop in between, okay. So like this procedure, as if continuously means more than, as we can say, continuously whole day, 48 hours, 24 hours, okay. When the continuously these regions are getting that heavy rainfall, so this is called as the cloud bursting. Are you getting? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes, chalo, ma'am. that's it for today. So we'll see you tomorrow. मैम Thank you, students. Ah, yes. Thank you, ma'am. कौन सी कंट्री मतलब आंसर क्या था पहले क्वेश्चन का? कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करती है क्रिसमस? क्रिसमस और क्यों? हाँ, जब से आप विंटर में करते हैं 25 दिसंबर को, तो वो कौन सी कंट्री है कि वो समर में सेलिब्रेट ना करके वो कौन से सीजन में करती है, और कब करती है, क्यों करती है? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन. गुड डे. हाय मैम. बाय. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम. प्लीज एंड द सेशन. मैम नेक्स्ट क्लास अभी है, तो सेशन एंड नहीं किया तो चलता. टीचर आऊंगी तो उन्हें होस्ट बना. ओके, अभी कौन आ रहा है? कौन है? मैम बायोलॉजी. नेक्स्ट. बायो का क्लास है. ओके ओके ओके. तो मीनवाइल आई आस्क यू क्वेश्चन जो मैंने मैम निकाल के रखे आपके लिए. पूछूं? महविश, हाँ. ओके, महविश Yes, है ma'am. यहाँ पे. महविश,
Please raise the hand so she can make you host. Tanvi Yes, is operating very well, no problem. yes. So Okay, bye Pallavi. students. Okay. So bye students. मैम आप ये क्वेश्चंस भेज सकते हो हाँ, मैं भेजती हूँ. Hello, good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Do you evening, know ma'am. who am I? Have you been introduced that someone is going to take your biology lecture today? Ma'am, we saw it in the timetable. Yes, ma'am. Okay. Okay. Just a second, I'll share video as well as my screen. Can you also pin yourself? Yes, yes, sure. Students, can you all see me? Yes, ma'am. Am I audible and visible to everyone? Just say me yes or no. Yes, ma'am. yes Okay. Ma'am, pin Okay. yourself. So You can't students, see. yes, I'll be conducting your biology lecture. Okay. So one by one, I just want to know each and every student. So can you just give me a short introduction? This is a first Yes, lecture. That's ma'am. why I don't want to directly skip to the topic. Let us first of all know each other and then we'll connect. Isn't it? I should also know Yes, you. ma'am. You should also know Yes, me. ma'am. Isn't it? Yeah. Okay. So I can see here Rutuja, Abhiraj, Abhishek, Advait, Ammar, Afifa, Anuj, Aryan, and so many students. Are you all from which standard? 10th You're pass. from 10th standard, okay. Yes, All ma'am. of you? Okay. All are Yes, from ma'am. 10th standard. Okay, okay. So today we'll just conduct a basic topic that is, you might have studied in 9th standard as well. What is the fundamental unit of life? Cell. 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 Cell, ma'am. Cell. Cell. Yes, definitely the cell. So, Cell. yeah. So from the basic we will start. I'll be sharing my screen with you. Okay. Just a second. Share.
Is it visible? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Ma'am, pin yourself. I don't know why I'm unable to share. Let me just try once more. Yes. Now can you Yes, see? ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Let me know again. Can you see the screen and the slide? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yeah. So why this such things are happening? Okay. Guys, can you see it? Yes, ma'am. Okay, then let us begin with this topic, which you have already studied in 9th standard. The fundamental unit of life is the cell. You know that the cells are the basic structure, right? And can you tell me the name of the scientist who discovered this cell? Robert Hooke, ma'am, I Yes, think. yes. Very nice, all of you. And I am very Woodcock. glad to know that तुम लोग को 9th standard का याद है अभी. Otherwise हम कल का भूल जाते हैं ना. So I'm very glad to know that you remember the 9th standard syllabus. So yes, it is. A cell of Woodcock. Yes. Robert Hooke was the first scientist who discovered this cell. Okay. A number of cells can work together to form a tissue or organ. Do you know that structural unit of organization? आपको पता है कि कैसे सेल से एक organism construct होता है? Yes, ma'am. Yes. Then, very nice. So who will tell me that? Ma'am, can I? Yes, sure. Ma'am, cell to tissue, tissue to organ, Yeah. organ to organ system, Okay. and then organ system to organism. Very correct. So in introduction, as you can see, the all living organisms are made up of cells. The cell is the smallest structural and functional unit of life discovered by Robert Hooke, okay, in the year 1665. And what is that figure? Can anyone tell me? Ma'am, Woodcock, Yes. On the woodcock, dead cell. Robert Hood discovered some honeycomb-like structures. When he saw, he does not know that what kind of structures are this. रॉबर्ट हुक को पता ही नहीं था कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स है और उसने रिजेंबल किया ऐसे स्ट्रक्चर्स को किसके साथ हनीकॉम के साथ सो हनीकॉम एंड दिस टाइप ऑफ द डायग्राम व्हिच यू आर सीइंग so this type of structures Robert Hooke have observed and they were nothing else later on discovered as the cell, right?
Yes, ma'am. Now, cell theory. Do you know the scientist Sheldon and Swan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, after Robert Hooke, these four scientists, Sheldon and Swan, they proposed the cell theory. Means Robert Hooke ने तो बस इतना ही बताया था कि कुछ structures मुझे दिखे हैं वो honeycomb जैसे resemble करते हैं, and उसने उनको cell के नाम दिया था और बताया था only about those things. And Robert Hooke के बाद जो दूसरे scientist आए हैं, जैसे Sheldon है, Swan है, इन्होंने सेल थ्योरी दिया, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, detailed images, everything was discovered and has been put on in a theory. Okay, so all living, first point, can anyone read? One point, anyone? All living All things are made up of cells. अच्छा, आप लोग collectively भी एक साथ read कर सकते हो. Come on, everyone, read. First point. all All living living things living are things made are up made of up of cells. cells. Second point. Cell Cell is the Cell basic is the unit basic of unit life. of life. Then third point. All cells All come from cells come from pre-existing pre-existing cells. cells. Okay. Now let us stop here at third point. ठीक है. Third point में आपको क्या दिख रहा है? All cells come from pre-existing cells. ये कौन से साइंटिस्ट ने बोला है? Rudolf Rudolf Rudolph. Virchow. Yeah. So, what do you understand by this third point? Cells come from the pre-existing cells. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Once the cell dies, the remains of Pre-existing that cell cells have to divides form the into another cells, and other the cells. cells Yeah. which are there that keep They are dividing. known as the precursors of the life. Right? Yes, ma'am. आप जो बोल रहे हो ना कि फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, सेल्स टू सेल्स डिवीजन होता है, एंड प्री एग्जिस्टिंग वन से अगेन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. सो such things they are known as again why this has been gone, they are known as precursors. What they are known as? What they are known as, guys? Precursors of life. Precursors. Yes. Okay. Now, Ma'am, can you please rotate your phone? okay. Full screen देखना है आपको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay. Why didn't you said me earlier? Yes, ma'am. Now it is okay. वो बोलते हैं ना देर से आए दुरुस्त आए. ऐसे हुआ है अभी. Okay. Now, types of organisms. Based on the number of cells, as we know that cells को कितनी categories में हमने Two. divide किया है? Two 220. categories में. Yes. The one is Single the cellular unicellular. and multicellular. Yes. So bullet points में मैंने आपको आज हमारा first lecture था, and I don't have any idea कि आपको कितना advanced knowledge है, कितना basic पता है, नहीं पता है. So I just started with the basic one. Okay. Yes, ma'am. So अभी as you can see, unicellular and multicellular. So can anyone define unicellular? Ma'am, Unicellular unicellular are are the the single-celled organisms which animals only owning one have one cell, cell. and multicellular are organisms having many cells in them. Many Yes, Yes. many cells. More Very than nice. one. Yes. So examples भी वहां पर लिखा है मैंने. Yes. Unicellular में examples रहेंगे amoeba, Amoeba and paramecium. paramecium. Yes. In multicellular, human human beings, Humans, plants, plants, animals. animals. Yes. Can you see the screen which is showing phagocytosis in the amoeba? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes. ma'am. So in the first picture, you will see that amoeba is like, you know, a complete organism is there. उसके जो surrounding walls होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? Pusopedia. Pseudopodia. Pseudopodia बोलते हैं, ठीक है? Finger like projections वो बना, finger like projections जो आपको दिख रहे हैं वहां पर, ठीक है? They are pseudopodias. और pseudopodia के अंदर अभी internal हम system में अगर जाते हैं amoeba के, you will see that
कि एक वहां पर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिखेगा फूड ओनली वैक्यूल। द फूड वैक्यूल दिखेगा आपको, न्यूक्लियस दिखेगा, फूड वैक्यूल दिखेगा। ओके, देन Yes, इन ma'am. द इन द सेकंड पिक्चर यू विल सी दैट कि अगर अमीबा को फूड लेना होता है, ओके, जैसे कि प्रे है और उसका एनी फूड पार्टिकल, आप एनी XYZ मटेरियल ले लो जो उसको एज अ फूड लगता है, सो व्हाट ही विल डू, दिस अमीबा विल एक्सपांड इट्स। क्रिएट अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हम अपने फिंगर से पूरे ज्वाइन करके से फूड को लेते हैं इनगल्फ करने के लिए, वैसे अमीबा भी क्या करेगा, it will create finger like projections which are called as pseudopodia, and it will take the food like prey लेगा, example ciliate वहां पर लिखा है, so it will engulf and it will go directly into the food vacuole. Okay, so and then you will see that वो जब फूड अंदर लेगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा, and all this collectively these are the mode of taking food by the unicellular organism. Similarly paramecium भी ऐसे ही food intake करेगा. What will be the difference between amoeba and paramecium? Paramecium pseudopodia से ही लेगा और any other body part. No, ma'am, it has Specific hair-like structures. Celia. As Cilia. cilia, very correct. Now coming to the next picture, multicellular organisms. Now in the second picture, you will see that there is a sperm cell, egg cell, root hair cell, ciliated epithelial cell, white blood cells, red blood cells, muscle cell, nerve cell, and many more are there. अभी आपके बॉडी में जितने भी सेल्स है, इसमें सारे मेंशन है क्या? नो, No, ma'am. या नो मैम, इतने रूट हेयर नहीं है रूट हेयर है, मसल सेल्स हमारे। के सारे टाइप के सेल्स दिए हैं क्या यहाँ पर? नो, No, दीज आर ma'am. ओनली फॉर योर एग्जाम्पल एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमंस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। एक सिंगल सेल किसमें होता है? ओनली इन यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन Being. बींग्स, एनिमल्स, इन सब में, प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ओके, Yes, सो ma'am. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द types of organism based on the number of cells. एक्सक्यूज मी मैम। Yeah, sure. मैम फैगोसाइटोसिस तो WBCs में भी होता है ना? Yes, it goes on WBCs also. यस मैम। So it does not mean that कि अगर फैगोस डाइजेशन तो ह्यूमन बींग्स में भी होता है तो अमीबा में भी हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन होता है तो मल्टीसेल्युलर में नहीं होना चाहिए। लिविंग बींग्स तो दोनों भी है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग बींग्स है, मल्टीसेल्युलर भी लिविंग बींग्स है। डिफरेंस एक ही चीज का है, द वन इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, द अदर इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अगर वन सिंगल सेल रहेगा तो ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ज्यादा सेल्स रहेंगे तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होंगे, मल्टी सेलुलर है तो मल्टी फंक्शंस परफॉर्म होंगे, यूनी है तो सिंगल फंक्शन परफॉर्म होगा, आइदर वो डाइजेशन करेगा, आइदर वो ओनली रेस्पिरेशन करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस। सो इसीलिए फैगोसाइटोसिस अगर यूनिसेल्युलर में हो रहा है, सो इट डज नॉट मीन कि मल्टीसेल्युलर में नहीं हो सकता है। सो द एग्जांपल व्हिच इज गिवन, लाइक आप जो बोल रहे हो WBCs का, इट्स टोटली like different functions can be same in the unicellular. Sometimes you can see digestion in multi and uni, both are common, right? Yes, तो ma'am. वैसे ही फाइगोसाइटोसिस भी वैसी ही है, कॉमन रहेगा बट डिफर करता है। Yes. now now the types of cells. How many of you know the difference between prokaryotes and eukaryotes? मैम प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट्स में जो वो पेट के सेल होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोरेज करना होता है, तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। उसकी जगह पे उनके पास मतलब बड़ा सा फूड वैक्यूल होता है। और यूकैरियोट्स को इतनी जरूरत नहीं होती फूड स्टोरेज की, तो उनके पास न्यूक्लियस भी होता है। Okay, very nicely attempted. एंड Now मैम अभी प्रोकैरियोटिक हाँ, सेल्स प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स होते हैं।
अभी Ma'am, इतना prokaryotic कॉम्प्लेक्स cells वर्ड can अगर easily divide, बाकी सबको whereas समझा है। eukaryotic cells cannot. यस, सबसे सिंपल डिफरेंस सबसे पहले अभी हम ये देखेंगे। अभी बहुत से स्टूडेंट्स है जिसको कुछ भी नहीं पता है कि प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है। अभी इवन लाइक 11 12 तक भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमको पता होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बट इफ यू गो फर्दर मोर इन डिटेल्स, ये हम याद नहीं रख पाते, डिफरेंस समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता है कि न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अभी आपको अगर आप स्ट्रक्चर सकते हो, इमेजेस डीएनए। देख सकते हो, एंड वी विल स्टडी दैट। Yes. Now we will begin with the prokaryote. Right? Prokaryote के सामने क्या लिखा है? No nucleus. Example, bacteria. Eukaryote. Nucleus present. Example, plants, animals. Do you think that only ये रीजन होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस के लिए? नो मैम। सिर्फ न्यूक्लियस रीजन हो सकता है क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? सिर्फ न्यूक्लियस डिफरेंस है, बाकी नो दूसरे मैम। सेल ऑर्गेनेल्स आपको नहीं लगता है कि वो भी डिफरेंट होंगे, फंक्शंस डिफरेंट होंगे? क्या लगता है? यस मैम, होंगे। यस, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। सो यस, न्यूक्लियस के अलावा भी अभी हम स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोट सेल्स को प्रिमिटिव सेल्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे डोंट हैव न्यूक्लियस, राइट? Sometimes do not ever get confused in future that अगर आपको primitive word आ जाता है, primitive means without a nucleus, okay? Without a nucleus, and eukaryotic cells को आपने consider करना है complete one. Prokaryote को primitive, P for prokaryote, P for primitive. Eukaryote, nucleus present, true cell, complete cell, okay? कंप्लीट सेल्स मींस इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। अगर किसी एक की बॉडी में अगर कोई ऑर्गन नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो प्रोकैरियोट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, उसके पास सारे ऑर्गन्स है, एवरी मसल, एवरी बोन, एवरीथिंग इज कंप्लीटली प्रेजेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यार तू यूकैरियोटिक है। So you and me are whom? We come in which category? Eukaryotic. Eukaryotic cells. Yes. यूकैरियोटिक। अगर अभी किसी को साइको बोलना है या कुछ आपको बोलना है कि अरे यार तेरे में तो दिमाग कम नहीं है, तेरे में तो ये नहीं है, डू नॉट यूज दैट वर्ड, प्रोकैरियोट। से तू प्रोकैरियोट है और तू प्रिमिटिव है, ऐसे ही वी कैन से दैट। सो I hope you remember the difference. P for prokaryote, P for primitive, lack of nucleus, lack of something. Okay. Eukaryote, complete cells, nucleus present, other cell organelles will be present. Okay. Well defined structure रहेगा यूकैरियोट में, सेल मेम्ब्रेन्स डेवलप रहेंगे, सारे उसके ऑर्गन्स उसके पास प्रेजेंट रहेंगे। So let us see in zoom the structure of plant cell. अभी प्लांट सेल, एनिमल सेल में आप देखो कि एक डिफरेंस क्या दिख रहा है? सेल वॉल का। यस, सेल वॉल डिफरेंस है, वैक्यूल का डिफरेंस दिखेगा, न्यूक्लियस का डिफरेंस दिखेगा आपको। यू कैन सी कि प्लांट सेल में दिस वैक्यूल कितना बड़ा है, दिख साइज रहा ऑफ है? वैक्यूल। साइज ऑफ वैक्यूल इज क्वाइट बिग। इज इट विजिबल? प्लांट यस सेल में मैम। आप देखो पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, And कितना also बड़ा the सा है difference of वैक्यूल वहां पर। chloroplast. If Yes, you ma'am. come towards the animal cell अंदर में की आपको तरफ मस्ती माइक्रोट्यूब्यूल्स ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, सबसे ऊपर छोटा सा वैक्यूल दिखेगा आपको, दिख रहा है? यस एवरीबॉडी? मैम। Yes, ma'am. यस। सो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बोला है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सेल्स को डिफरेंट करने के लिए, वो तो जस्ट कैटेगरी में हमको डिवाइड करना है, मेजर कैटेगरीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनिज्म के पास ब्रेन, राइट? अब अगर उसके पास ब्रेन ही नहीं है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे ना,
तो इसीलिए सेल्स के पास भी क्या है अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस जो उनका ब्रेन होता है, तो वही नहीं है किसी के पास, तो वो प्रोकैरियोट है। जिसके पास ब्रेन है उसके पास, इसका मतलब न्यूक्लियस है। हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, ह्यूमन बींग्स नहीं आते इसमें। सो अनदर डिफरेंस, वैक्यूल, राइट। अभी किसी ने सेल मेम्ब्रेन कहा था, सेल मेम्ब्रेन का भी डिफरेंस है। Also the difference of chloroplast. यस, प्लांट Cell सेल में आपको wall. क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, एनिमल सेल में ग्रीन कलर की उसको रिक्वायरमेंट है क्या? सनलाइट से बस फूड ले लिया, ग्रीन कलर प्रिपेयर कर लिया, फोटोसिंथेसिस हो गया। No. मैम सेंट्रोमियर का भी डिफरेंस दिखेगा, सेंट्रोजोम का, सॉरी। सेंट्रोसोम, यस। और look at the figures properly and let me know. मैम Let's, साइज में या शेप एंड साइज तो डिफरेंट डेफिनेटली वैरी करेगा। Ma'am, the plant cells have thick cell wall. प्लांट सेल्स में आपको पेरोक्सीजोम भी दिखेगा, एनिमल सेल में मिसिंग रहेगा। Golgi apparatus. या एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस Ma'am, होता है, यस, prokaryotes are और membrane bound. ग्रैन्यूल्स भी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्लांट सेल। वेरी नाइस। तो चलो अभी वन बाय वन हम क्या करते हैं Are अभी। ma'am membrane bounded. यस, तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सबसे फर्स्ट थिंग विच वी नोटिस दैट वाज द न्यूक्लियस। तो भी न्यूक्लियस के बारे में हम क्या करेंगे, वी विल राइट अबाउट द न्यूक्लियस। ओके, यस मैम। आई विल रिपीट, कैन यू राइट? Yes, ma'am. Yes. Is it easy for you or should I manage something else? और Easy. ये राइटिंग वर्क कल करते हैं, हम ऐसे करेंगे। ओके, Okay, ma'am. यस मैम। या राइटिंग वर्क कल करते हैं बिकॉज there are so many points, and if I'll dictate you, some of you will able be to write and others will not be able to write. So we'll do the writing work tomorrow and theory work we'll do today, the learning part. Okay, तो अभी सिर्फ हम अंडरस्टैंड करते हैं। now after nucleus we have the cell membrane. okay, cell membrane का थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ मैं। what is cell membrane? outer covering, right? यस मैम, सेमी Cell परमेबल membrane, मेम्ब्रेन। yes, it is a outer covering and it is made up of phospholipid bilayer membrane. It is selectively permeable in nature. Selectively permeable means, सेमी परमेबल, ओनली अलाउ सर्टेन मटेरियल्स टू एंटर। yes, selectively permeable means वो कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करेगा, जैसे कि हमारी बॉडी होती है। ओके, एंड आवर बॉडी आल्सो परफॉर्म्स द सेम फंक्शन। अगर हमको कोई चीज हार्मफुल होती है, वो तुरंत हमको रिएक्शन दे देती है स्किन पर, इजंट इट? किसी को अगर डस्ट की एलर्जी है, किसी को वाटर सूटेबल नहीं है, किसी को मे बी एनी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करता है तो इमीडिएट रिएक्शन आता है, राइट? सो आवर स्किन इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल। स्किन भी हमारी सेलेक्टिव चीजों को सेलेक्ट करती है, अगर वो रिक्वायर्ड है तो उसको लेंगी, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो कुछ रिएक्शन देंगी और उसको अपने स्किन में एंटर नहीं होने देंगी। तो सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो selectively permeable in nature. And what are cell walls? फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन्स। यस, द सेल वॉल, अभी जैसे मैंने आपको बोला सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना है एंड सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है। रिमेंबर दिस डिफरेंस। ये लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अगर आप 10th स्टैंडर्ड के लिए लाइक बोर्ड एग्जाम्स में समटाइम्स दिस डिटेल्स मैटर, यू नो। आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कभी ट्रू और फॉल्स में आ जाता है, करेक्ट द स्टेटमेंट्स में आ जाता है। सो सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से, सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से।
Okay. एक्सक्यूज मी Now, मैम, yeah, मैम हम लिपोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं ना? लिपोप्रोटीन्स किसको? आपने कहा कि फॉस्फोलिपिड्स बोल के कुछ तो। Yes, you can say that. या You can call them collectively. अगर आप दोनों को अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि दिस लिपोप्रोटीन्स, सो यू कैन हैव अ आइडिया दैट कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसके बारे में बात हो रही है। अगर आपको डिफरेंस बताना है कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपोप्रोटीन होता है, देन इट इज फॉस्फोलिपिड। ओके, यस मैम, एंड सेल वॉल में इट इज अ सेल्यूलोज। यस मैम। नाउ अभी हम वॉल्स के तरफ से मूव होते होते अब जाएंगे इनसाइड ऑफ द सेल, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपको जितना भी Fluid अभी like प्लांट structure in the cell in फ्लूइड लाइक which the स्ट्रक्चर, organelles Flow. floats. यस, फ्लोट करते हैं। ओके, फाउंड होते हैं जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसका अंदर का इंटरनल सिस्टम जितना भी आपको दिख रहा है, येलोइश पार्ट, एंड इन एनिमल सेल लाइट ग्रीन पार्ट जितना भी आपको दिख रहा है, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे हम अभी फोन पर वर्ड यूज करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ द सेल, प्लांट सेल का बैकग्राउंड, एनिमल सेल मैम, का बैकग्राउंड। यस, साइटोप्लाज्म लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे आप, ये पूरा सेल का बैकग्राउंड है बेटा, जिसके अंदर सारी सेल्स की अब जैसे हमारे अंदर इंटरनल बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनल सिस्टम, इंटरनल बॉडी। तो वैसे ही प्लांट और एनिमल का जो इंटरनल बॉडी रहेगा, उसके अंदर उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर आपको मिलेंगे उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स। ओके मैम। अब जितना भी लाइक आपको आइडिया होगा, एनिमल सेल रहने दो, ह्यूमन बॉडी रहने दो, एनिमल बॉडी रहने दो, व्हाट इट इज लाइक इंटरनल, अगर हम कट करेंगे एनिमल बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, फ्लूइड निकलता है, राइट, ब्लड निकलता है, इजंट इट? Yes, सो ma'am. सिमिलरली इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, जो साइटोप्लाज्म रहेगा वो फ्लूइड की तरह रहेगा। इट विल बी fluid found inside the cell. It gives the structure to the cell and house different organelles of the cell. Now next, ओके now basic parts, cell membrane, cytoplasm, nucleus, जो अभी हमने डिस्कस किया है। Yes, ma'am. You do one thing, students, you take the screenshots of this. I want you to, yes, tomorrow, I want you to draw it. Let me just go on the previous slide as well. Have a screenshot of this. यस मैम, टेकन। Good. Everyone else? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Move ahead. ये भी सेम है। नेक्स्ट, अभी हम आप स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे फीचर्स कौन से मिसिंग रहेंगे, कौन से प्रेजेंट रहेंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। फीचर्स में आपको फर्स्ट टेबल में दिख रहा है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल शेप। ओके, नाउ प्लांट सेल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। Absent. क्लोरोप्लास्ट
प्लांट सेल में प्रेजेंट प्रेजेंट, रहेगा, एनिमल सेल में एब्सेंट, वैक्यूल, एब्सेंट, यस वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा लार्ज हुआ, रहेगा, यस एनिमल सेल में स्मॉल रहेगा। शेप कैसा स्मॉल रहेगा रहेगा, प्लांट सेल का? रेक्टेंगुलर, एनिमल सेल का रेक्टेंगल, राउंड रहेगा। राउंड। ओके, मैम अलग भी हो सकता है ना? स्टूडेंट द थिंग इज दैट कि जब आप डिफरेंट बुक्स यूज करते हो एनिमल्स में तो डिफरेंटली, मैम अलग अलग टाइप्स के सेल, तो फिर उन सबका शेप तो अलग होगा ना? सी सेल सेम रहेगा, एनिमल सेल में डिफरेंट क्यों रहेगा? डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट सेल्स होते हैं क्या? अगर मेरे बॉडी में एपिथेलियल नो मैम, सेल्स है, राउंड शेप। मैम वो कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स अलग रहते हैं, WBC यस मैम। हाँ टाइप्स वो बोल तो रहे हैं वो। रहेंगे, ये टाइप्स तो रहेंगे ना मैम तो ऑब्वियसली। उन सबका शेप भी तो डिफरेंट होगा ना? जैसे कि एनिमल मसल सेल सेल ऐसे लॉन्ग रहेंगे। यस यस उनका शेप भी डिफरेंट रहेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर एनिमल सेल है, ठीक है, अभी हमने ये एनिमल सेल का पिक्चर है, तो अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं, all the dogs will have the same kind of cell. Are you understanding? यस मैम। If we are going with the cat, if we are going with the goat, if we are going with the lion, so जैसे वो species को belong करते हैं, तो वैसा ही सारे एनिमल्स में उनके जैसा species के according रहेगा cell. If we talk about the human being में आप different person हो, मैं different person हूँ, but cells different है क्या? नो मैम। नो No, मैम। ma'am. Cells same रहेंगे ना? सेल्स मेरी बॉडी में स्मूथ मसल सेल, कार्टिलेज सेल, बोन सेल, हेयर सेल, इजंट इट? ये सब तो आपके और मेरी बॉडी में सेम रहेंगे, ऑल दो हम यस मैम। दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, बट सेल्स तो सेम रहेंगे ना। तो दैट इज द डिफरेंस व्हाट दैट आई एम सेइंग यू। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स का ओवरव्यू देखते हैं हम। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सबको पता है, क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर हाउस है। ओके, और पावर हाउस क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या जनरेट करता है जैसे हमारी बॉडी मैम में हम ATP एटीपी, जनरेट करता है। एडिशनल एग्जैक्टली फॉस्फेट। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी अगर करेंसी हम, ऑफ सेल। यस यस, जैसे हमारी बॉडी में हम अगर पानी पी लो, खाना खा लो, तो तुरंत क्या मैम होता है? आपका वॉइस ग्लूकोज ब्रेक हो डेवलप रहा है। होता है। अभी भी हो रहा है? No, ma'am. नो मैम। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? वी टेक वाटर, वी टेक फूड, फॉर व्हाट पर्पस? वी टेक फॉर द एनर्जी सोर्सेज, राइट? यस तो मैम। यस सिमिलरली मैम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जैसे भी उसको लाइक सेल अगर प्रोवाइड करता है फूड इनसाइड इट साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल में जब फूड जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी उसको क्या बनाएगा। करेंगे? एनर्जी करेंसीज में कन्वर्ट करेगा, और सारे फंक्शंस के लिए परफॉर्म करने के लिए सेल को एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। ओके, यस मैम। and one more important thing is that they have a DNA called mtDNA. They also have a मैम कैन DNA. यू रिपीट? आपने यस ये मैम, यस माइटोकॉन्ड्रिया मैम। हैज इट्स ओन DNA. माइटोकॉन्ड्रिया हैज yes इट्स ओन डीएनए। yes so इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस उसको ऑर्गेनेल बोला गया है। ये क्या करता है? ये अपने खुद के प्रोटीन्स बनाता है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस। जैसे अगर हम मशीन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, तो डिफरेंस समझ रहे हैं आपको? यस मैम। अगर पूरा खुद ही कंट्रोल करेगा तो हम बोलेंगे कि ऑटोमेटिक। उसके, यस ऑटोमेटिक। और अगर उसमें फंक्शंस डिफरेंट, वो खुद की मर्जी से भी परफॉर्म करेगा, आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग भी एडजस्टमेंट करके
कभी कभी अपने फंक्शंस को चेंज कर देगा, तो तब उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमस। खुद की भी कभी सुनेगा, कभी दूसरे सेल्स की भी सुनेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग दोनों भी कनेक्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे अपना फंक्शन। सो दे आर सेमी ऑटोनॉमस। यस नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी। गोल्जी बॉडी। Yes. Now, Golgi bodies, they are called as what? Who will say this? Golgi किचन ऑफ द apparatus. सेल। Okay, यहाँ पर पैकेजिंग लिखा है और किचन भी राइट है। और क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, किचन ऑफ यस द मैम। सेल, जहाँ पर सारा खाना पकेगा और सबको मिलेगा इक्वली, इक्वल एनर्जी मिलेंगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यूट्रिशन का, so that all the members of the cell can perform function smoothly. Correct. Next is ER, endoplasmic एंडोप्लाज्मिक reticulum. रेटिकुलम। So there are two types of endoplasmic reticulum, smooth and rough. रफ कब रहेंगे? जब उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। स्मूथ कब रहेंगे? जब राइबोसोम्स एब्सेंट रहेंगे। एब्सेंट होंगे। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और दोनों के दोनों क्या करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व रहेगा, ये रहेगा इन्वॉल्व लिपिड मेटाबॉलिज्म में। डिफरेंस समझा? अगर आपको जो जो पॉइंट समझ रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि ये कुछ न्यू है, डिफरेंट है, तो उसको तुरंत रिपीट करने के लिए बोलो, और अगर आपको नोट कर सकते हो तो यू कैन नोट इट डाउन फास्ट। यस मैम। So, endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों रहेगा? राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से रफ सरफेस रहेगा। स्मूथ क्यों रहेगा? क्योंकि राइबोसोम्स राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं एब्सेंट होंगे। रहेंगे, यस, एब्सेंट रहेंगे। तो अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसिस। करेगा। मतलब कि प्रोटीन अभी क्या हुआ है? प्रोटीन तो उसको मिल गया है, अभी प्रोटीन को यूज कैसे करना है वो क्या करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन रहेगा। अब प्रोटीन एक एक सेल्स ने अपना अपना फंक्शन डिवाइड कर लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा, गोल्गी बॉडी किचन है, एंड यहाँ पर अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब सिर्फ प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, प्रोटीन को यूज करेगा, प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कितनी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डेफिशिएंसी हो रही, और चाहिए, कम चाहिए, everything will be under the control of the rough endoplasmic reticulum only for the protein synthesis. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहेगा टू रेगुलेट लिपिड सिंथेसिस, लिपिड यानी कि फैट्स। यस मैम। अगर सारे सेल्स एक ही फंक्शन करेंगे, एक ही चीज को कंट्रोल करेंगे, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स को कौन कंट्रोल करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, वर्क कैसे करेगा बॉडी, इजंट इट? सो इतना माइंड में रखना that all the different cells, they have their own synthesis, they will use their own lipoproteins to make the cell function properly. Okay. और यस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? डिटॉक्स भी करेगा। जैसे अगर कोई सेल है, अगर लाइक कोई टॉक्सिक एजेंट आ गया है, कोई इम्प्यूरिटी आ गई है, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करेगा। यस मैम। आई होप यू नोट दिस। अभी लाइसोसोम्स क्या करते हैं? क्लीन अप करते हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बॉम्बर। Suicide bags. yes, they are also known as suicide bags. Why? मैम बिकॉज दे Because they destroy blast themselves. and destroy the cell. And the वजह से When the they cell is destroy the old or cell. injured, lysosomes they destroy. Yes, very nice. Actually, They contain certain ये enzymes. एक lysosomes burst up. yes, लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स, दे प्ले अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो लाइसोसोम के पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर एंजाइम है। अगर मैंने बोला कि लाइसोसोम्स के पास क्या है, लाइक आप कोई भी लेटर, कोई भी नेम दे दो उसको, ठीक है, उसके पास एक्स एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है? एक्स है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है?
एक्स एंजाइम। ओके, तभी ये एंजाइम क्या करेगा, अगर लाइसोसोम के पास कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, टॉक्सिक मटेरियल आता है जो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो पूरे सेल को ऑर्गेनेल्स को, दूसरे सेल्स के ऑर्गेनेल्स को डिस्टर्ब करेगा, फंक्शन परफॉर्म करने नहीं देगा, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको लेता है और उसके पास जो एक्स एंजाइम है वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए। बट अभी क्या होगा, एक लिमिट होती है, राइट। इफ वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइक, अगर हम डेटा यूज करते हैं, डेटा यूज करने की भी लिमिट होती है। अगर आपने 2 GB आपके डेटा है, अगर 2 GB के ऊपर आपने यूज कर लिया, डेटा लिमिट खत्म ना, आप यूज कर पाओगे क्या? नो मैम। नो एक मैम। लिमिट होती है, राइट। सो वो लिमिट के ऊपर अभी क्या होगा, लाइसोसोम्स की भी एक लिमिट रहेगी, वो कंटिन्यूअसली फॉरेन मटेरियल्स को लेगा, टॉक्सिक मटेरियल्स को लेगा, उसके पास जो एक्स एंजाइम है वो उसको सेल के अंदर ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। देन वन डे व्हाट विल हैपन, वो बैग्स फुल हो जाएंगे, लाइसोसोम्स के बैग्स कैसे हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, एंड वन डे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएंगी और वो क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है दैट दे आर दी सुसाइड बैग्स। वो दूसरे सेल्स को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए एंड पूरी सेल की बॉडी खराब होने से बचाता है, और खुद ही के अंदर पूरा टॉक्सिक मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा करेगा, एंड जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएंगी वो बस्ट हो जाएगा, वो खुद ही वहीं पर सुसाइड कर लेगा। So that is why they are known as the cleanup cells, suicide bags, and so on. Next. Importance of the cell. यहाँ पर तो मैंने 2 ही डाले हैं, 3 मेंशन किए हैं। देर आर सो मेनी इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्स। आप मुझे वन बाय वन बताओगे, पहले फर्स्ट तो हम ये डिस्कस कर लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्स। दे परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे। नाउ आगे के आप ऐड करके बताओ मुझे, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल्स, helps in इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्स। reproduction. रिप्रोडक्शन, वेरी गुड। मैम सिग्नल ट्रांसमिट ओके, such as neuron cell. ओके। Ma'am, they show hereditary characteristics. In nucleus, we have chromosomes. I did not heard it properly. Repeat once again. Cells, they provide hereditary characteristics with the presence of Yes, chromosomes in nucleus. yes, yes. Very nice. रिपेयर एंड जनरेशन में हेल्प करेंगे, डैमेज टिश्यूज को, डैमेज सेल्स को वापस से रिपेयर करने में, रीजनरेट करने में भी हेल्प करेंगे। Fight with bacteria. Yes, worn out of the cells. You might have learned this word, you might have gone through these words in so many times. Worn out of the cells, repair, and आपने ये पढ़ा होगा ना। Yes ma'am. हेरिडिटरी के लिए अभी जो पॉइंट बोला था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल पास होगा, राइट। ट्रेड्स पास होंगे उसके थ्रू, दैट इज व्हाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नाउ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, so many are there, inheritance, hereditary. Next. Conclusion. Cells, building blocks of life, help us understand organisms, help us build new organisms, and अभी जितने भी हमने importance of functions study किए हैं, all those will come under the importance and in also the conclusion. So this was end of the slide. Do you have any questions? No, ma'am. No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Do you want me to repeat this chapter या और ये chapter में से आपका कोई difficult part है, कोई point आपको नहीं समझा है No ma'am. पहले भी? अभी तो बहुत short में मैम हमने basic इसके क्या है, इस पर आने वाले क्वेश्चंस के टाइप
Yes. क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो वाले टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको. ओके. I'll share with you question bank. मैं आपको share करूंगी with answers. So we'll have a question practice with answers on this topic. Yes, ma'am. Madam, metabolism means Yes, Ma'am. yes. metabolism means See, metabolism of the cell is nothing but a chemical reactions जो बहुत necessary है life के लिए. जैसे कि अगर आप खाना खाते हो, डाइजेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा, आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड होगा, एनर्जी मिलेंगी, दैट इज मेटाबॉलिज्म, राइट. सो जो भी आपका फंक्शन बॉडी परफॉर्म करता है वो सब मेटाबॉलिज्म है. अगर आप ब्रीथ कर रहे हो, यू आर टेकिंग ऑक्सीजन, योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, और आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन को कैच करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू दी जो हेमोग्लोबिन रहेगा वो कन्वर्ट करेगा into the red blood cells combining with the oxygen. Hemoglobin combine with the oxygen to convert into RBCs. Then RBCs is circulated in your blood streams. तो ये सारे जितने भी फंक्शंस है जो आपका बॉडी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप डाइजेशन कर रहे हो, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, देन बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल दिस फंक्शंस तभी परफॉर्म हो रहे हैं जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. यस स्टूडेंट्स, No, ma'am. Nothing. No, ma'am. आर यू श्योर? Ma'am, what all topics we are going to cover? I'll ask to sir. He already gave me this topic. One topic was this. Ma'am, Yes. I want to take screenshot of conclusion, please. This that page. You can. Which one? Conclusion वाला. Conclusion में उसमें कुछ भी नहीं था. Ma'am, Okay, Yes. thank you, ma'am. ma'am, are we going to get any preparation leaves? Preparation leaves that you can ask to sir. My role is only to clear your doubts और आपको अच्छे से explain करना, आपको questions, आपको सारी facilities, subject और lessons के according वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो. Other than that, sir will say you about it. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay? तो आप ये सारी जो information है sir से लो. Okay? हाँ, ma'am. Okay then. We'll disconnect. We'll stop our conversation here. And I hope to connect with you soon tomorrow. And tomorrow I'll give you all the theory work, the writing part, और I'll ask to sir about it कि sir आपको खुद से provide करेंगे. Okay. Okay? Okay, ma'am. Bye, ma'am. Yes, yes, everyone. Bye, everyone. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you, ma'am. Yes, most welcome. थैंक यू मैम Most welcome. See you tomorrow, everyone.